Good afternoon, sir. I am Ananya Dixit. This is Ananya Choudhary, and we're with Hasnain. We're from the media cell. And we would just like to ask you a couple of questions regarding your talk here today and in general. Some questions. So, Ananya. नमस्ते सर। सर, हिंदी दिवस के अवसर पे आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? यूँ मैंने अपने वक्तव्य में इस बात को जितना विस्तार से संभव था उतना कहा है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि हिंदी मेरे लिए इस देश की विविधता की रक्षा करने वाली भाषा है। इसलिए हिंदी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वह तमाम भारतीय भाषाओं की प्रतिनिधि और संरक्षिका के तौर पर, खासतौर से प्रतिनिधि और बराबर के प्रतिनिधि के तौर पर काम करें। धन्यवाद सर। सर, ये क्वेश्चन दूसरा जो मेरा प्रश्न है वो हिंदी मीडिया के ऊपर है। तो आज हम मूवीज़ और बुक्स देखते हैं, तो व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन द अप्रोप्रिएशन ऑफ हिंदी कल्चर एज शोन इन द मीडिया, the books and the movies and any other cultural items which we see around us? To be honest, I'm really worried about it. And it's the fact is that for some reason, the very idea of Hindi is appropriated for a majoritarian understanding of our nationalism, of our nation, and that is something I'm really worried about. And it is for the students like you and your generation to look for the design behind such appropriation. To me, Hindi, by no means Hindi represent such majoritarian view. Hindi is essentially a very inclusive language and culture, and that's the way it should be. Thank you, sir. Sir, I also read about you that you specialized in media as well. So, in the current scenario where there is so much globalization and so much interaction among countries and cultures, what would you like to say about the importance or prominence of Hindi in such a globalized world? See, the very idea of a language which from various estimates is spoken by from 30% to say around 50% of the population, you cannot wipe off the idea of Hindi media. Hindi media is and will continue to be the mainstream media of the country. The positive aspect obviously is the emergence of the new media, social media, where the people like you, our students and the individuals, they become the torchbearers of the journalism there. I see hope there. Otherwise, mainstream Hindi media is not something I would be very happy about. एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी, जैसे a university like the Delhi University which sees students from all over the country in particular, and a lot of students from the Hindi medium in particular, and even in a city as cosmopolitan as Delhi, we see a sort of dominance of the English language in particular, and how students from the Hindi medium face a certain sense of difficulty in adjusting to it. So, according to you, how can we incorporate those students in particular and incorporate the Hindi language in particular into our curriculums or into the studies that we follow? देखिए, हिंदी के वे विद्यार्थी जो बाकी अलग अलग राज्यों से या इसी शहर के अलग अलग हिस्सों से विश्वविद्यालय पहुंचते हैं, वे जब विश्वविद्यालय की या अलग अलग कॉलेजेस की संस्कृति में अपने आप को अनफिट पाते हैं, तो हम देखते हैं दरअसल देयर आर फोर्सेस विच फॉर सम रीज़न वो उनको पुश ऑफ करती है, वो बाहर की तरफ धकेलती है। ऐसे में हैंड होल्डिंग इज समथिंग दैट आई लुक फॉरवर्ड टू। आई बिलीव दैट इंस्टीट्यूशंस शुड institutionally ensure this hand-holding process, especially in the orientation itself, and some prominence should be given in the orientation programs of the different institutions. ये संदेश उन तक बिल्कुल साफ तरीके से पहुंचना चाहिए कि कॉलेज की कॉर्पोरेट लाइफ में, कॉलेज की एक्टिविटीज़ में उनका बराबर का हिस्सा है, वो क्लासरूम हो या क्लासरूम से बाहर। ये संदेश अगर उन तक नहीं पहुंचता तो फिर वी फेल एज इंस्टीट्यूशन।
Because after all, what institutions are? Institutions are a location where the individual students get opportunity to perform their best. And if their best for some reason is suppressed because of any cultural factor, including language, तो मुझे लगता है कि we fail as institution. सर, हमारा अंतिम प्रश्न आपसे ये होगा कि आप सेंट स्टीफेंस कॉलेज के विद्यार्थियों को और कुछ कहना चाहेंगे एज अ लास्ट वर्ड? मैं सेंट स्टीफेंस के तमाम विद्यार्थियों को पहले तो उन्हें बधाई देता हूँ कि आप इतने खूबसूरत, इतने शानदार इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं. मेरी सलाह ये है कि इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं. लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ केवल क्लासरूम में नहीं है. लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके लॉन में हैं, आपके दोस्तों के साथ हैं, आपकी दीवारों में हैं, आपके नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ इंटरेक्शन में है. प्लीज़ यूटिलाइज इट टू द मैक्सिमम. यू विल नेवर गेट दीज 3 years अगेन. तो इन सालों का मैक्सिमम इस्तेमाल कीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है. रैलिश कीजिए उस कंपोजिट कल्चर और डाइवर्सिटी को जो ये इंस्टीट्यूशन आपको देता है. और अगर आपने इससे ये चीज़ें हासिल कर ली, तब आप जीवन भर मुझे नहीं लगता कि कभी भी निराश हो.